and privilege to introduce to you two very distinguished guests today. On my left, Mr. Subhash Chandra Baheria. He is an eminent industrialist and a member of Parliament and a member of the Standing Committee on Textiles and Labour. Mr. Punit Lalbhai, who is the Executive Director. My left, Mr. Subhash. That's quite a lag. Mr. Punit Lalbhai is the Executive Director of Arvind. Those of us who know, the Lalbhai family has been associated with the institute for a very long time. Mr. Baheria has more than 40 years of experience with textiles. He has produced more than 2 million meters per month. He's the man behind Warriors Holdings, which I just came to know. I was not aware. He was a part of Aditya Birla Group. Since 2000 we are. There you go. So, a distinguished gentleman, and he's he's a 3-time member of Parliament. And from our perspective today, you have textiles के संदर्भ में जो है also Mr. Punit Lalbhai. So my request to both of them would be to kind of share with us their perspective, आपका जो नजरिया है on 3 or 4 things which are key challenges going forward. एक जो technology के perspective से है, second from a regulatory perspective, third from the perspective of human skills, capability, and the last from a market and demand. किस तरफ जो है market और demand जा रहा है? क्योंकि अगर इंडिया में, so by the way, you are aware that textiles is a $200 billion industry, 45 million people employed, so very large, and we export 40 billion, 45 billion. Last year it was around 43 billion, so that's 10% of our goods exports. But we have a long way to go in front. If you have a $5 trillion economy and you take a pro rata basis, so 3 trillion में अगर आपका 200 billion contribution है, so that's around 7%. So 5 trillion में $350 billion होगा, so 200 से $350 billion अगर जाना है आपको in around 8 years time. So what might be some steps in these four areas which will help us to get there? So that's the broad idea for the session. I आपसे गाइड करूँगा कि आपने पहले 15 मिनट के लिए questions that will be asked for set up. You are listening then after that there will be a few questions from my side and then we'll open it up to the audience. We have about an hour. Both Mr. Baheria and Mr. Lalbhai are on a fairly tight schedule. Baheria is leaving tonight for Kota. Mr. Lalbhai has also got another engagement. So we need to finish around 7:45, 7:48. So over to you, sir. Arvind sir, उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, आज जो मेरी इच्छा थी सबसे बार मिलने की, IIM को विजिट करने की, क्योंकि अरविंद सर को बता रहा था कि 76 में आफ्टर ग्रेजुएशन इच्छा थी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने से और उस टाइम की जो इच्छा है आज आने का मौका, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो आज टॉपिक है टेक्सटाइल्स का, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया, वो विजन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और $5 ट्रिलियन के लिए सभी, वो भले एग्रीकल्चर हो, सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, और सबको उसमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उसी हिसाब से। आप किसी भी चीज में ले लें, क्योंकि जो दूरदृष्टिता है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, वो अकल्पनीय है। अभी स्तर में बता रहा था दूसरा कि मैं 96 में जब पहली बार MP बना और हमारे एक प्रशिक्षण शिविर में मोदी जी आए थे,
उस समय पार्टी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री थे। और 96 में मैंने पहली बार लैपटॉप उनके हाथों में देखा और उन्होंने उस समय हमारे को अपने बौद्धिक में बताया कि माननीय जनप्रतिनिधियों सुनो, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है वो अनपढ़ कहलाएगा। ये 26-27 साल पहले हुआ था, जबकि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं एमपी था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैंने कंप्यूटर भी नहीं देखा और वो उस समय लैपटॉप का यूज करते। जो बिजली, जो उनका दूरदर्शिता है, आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, जैसे तो भाई वो गरीब को कोई सहायता जाती है तो जो संकाती राजीव गांधी जी ने बोला कि रुपये हम भेजते हैं उसके पास 15 पैसे पहुंचते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाला कि सबके अकाउंट्स खोल के आज सारा जो पैसा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा बिना किसी लीकेज के सारा सीधा खाते दिया। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। और इसी तरह से जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उनका सपना है और उसके लिए प्रयास भी पूरे हो रहे हैं। अलग अलग विभागों को बोले, एग्रीकल्चर हो, कृषि में भी वो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करनी है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और टेक्सटाइल में भी पॉलिसी वाइज जितनी जो इंडस्ट्री के फेवरेबल पॉलिसी जितनी हो सके उतना वो चेंज करते जा रहे हैं। आप शुरू से मैं भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा भी आज की तारीख में सिंथेटिक टेक्सटाइल का काफी बड़ा हब है। और मैंने 1982 में जब वहाँ स्टार्ट किया काम तो कुल भीलवाड़ा में 5 लाख मीटर कपड़ा बनता था और आज वो लगभग 9 करोड़ मीटर महीना, पहले 5 लाख मीटर महीना बनता था और 9 करोड़ मीटर महीना वहाँ आज प्रोडक्शन होता। ये ग्रोथ मैंने मेरी आंखों से देखी, मेरे सामने। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का है वो होता है। आज जो स्थिति है टेक्सटाइल की भी अरविंद सर ने बताया ही है कि टेक्सटाइल जो खड़ा है अपने लिए, क्योंकि इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल में है और जो वर्ल्ड का है, ग्लोब का लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में, लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में, और एक्सपोर्ट में हम तीसरे नंबर पे हैं। काफी दिक्कतें हैं तो अलग अलग जो है आज उनकी। और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत इंडिया में है, क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, क्योंकि कुछ तो पहले टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, क्योंकि ग्लोब का पूरा वर्ल्ड का जो रेशियो है टेक्सटाइल में वो मैन मेड फाइबर का 70% प्रोडक्शन है, 30% कॉटन का है। अपने इंडिया में इसके बिल्कुल अपोजिट है, कॉटन 70% है, 30%, क्योंकि कभी इसको प्रेफरेंस नहीं दी। और जो टारगेट अचीव करने हैं, लक्ष्य जो अचीव करने हैं, उसके लिए जरूरी है कि मैन मेड फाइबर का जो प्रोडक्शन है टेक्सटाइल का वो बढ़े, टेक्निकल टेक्सटाइल बढ़े, तो ही ये अचीव हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो अभी जब ये जीएसटी लागू हुआ था, अरुण जेटली जी उस टाइम थे और मैं भी मेंबर था, तो उस टाइम उनका पॉलिसी में यह था कि भाई कपड़े में, कॉटन में 5% जीएसटी हो और सिंथेटिक मैन मेड जो है उसमें 12% हो। क्योंकि वैसे ही अपने यहाँ मैन मेड का कम है और इसके कारण वो ग्रोथ इंडिया में रुकी हुई थी, पर वो उसके कारण और मैं जेटली जी से मिला और उनसे चर्चा की विस्तार में, और लास्ट में उनको एज ए लेमैन समझाया, कॉटन का कपड़ा भी ले गया और सिंथेटिक का भी ले गया। और मैंने कहा आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या फर्क है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा अननेसेसरी लिटिगेशन हो जाएंगे, आप कम से कम दोनों की रेट एक रखो। उन्होंने उस टाइम बात मानी और वो उसकी 5% कर। तो एक्चुअल में जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है डिसाइड करने की। अगर उस टाइम पे इसका 12% हो जाता तो शायद होता, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन लिमिटेड है, उसमें भी रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन है वो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता। तो इस कारण से वो टेक्सटाइल में एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैग्नेशन,
वो है जहाँ का सही रह जाता है, थोड़ा बहुत जो जनरल इंक्रीज होता है उतना, लेकिन उन्होंने मानी। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई अपने को, क्योंकि टेक्सटाइल सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इंडिया में आफ्टर द एग्रीकल्चर है। और दूसरी चीज जो रेडीमेड गारमेंट है, अपैरल्स इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें कम इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, और इसमें वैल्यू एडिशन भी इतना ज्यादा होता है कि आपके जो भी एक्सपोर्ट से है आज, तो वो उसको जो लक्ष्य को पूरे कर सकते हैं अगर इसमें हो। तो इस कारण से इसके हिसाब से भी पॉलिसी भी आ रही है। गवर्नमेंट अपने जो इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन इंडिया में अवेलेबल है, फ्रॉम फाइबर टू गारमेंट, ये पूरी अवेलेबल है। हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो, पूरी अवेलेबल है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है। और रॉ मटेरियल में कॉटन में बहुत बड़ा सबसे इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और उस कारण से अवेलेबल है। और ट्रेडिशनल स्किल अवेलेबल है, जूट के अंदर भी हम लार्जेस्ट हैं। तो टेक्सटाइल सेगमेंट में सभी आ जाते हैं, जूट हो, टेक्निकल टेक्सटाइल हो, कॉटन हो, सिल्क हो, सभी आ जाते हैं। तो उस हिसाब से और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इंडिया का खुद का मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है। अभी कभी बात होती है कि साहब बांग्लादेश में एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, वियतनाम का ज्यादा हो गया, वो इतने छोटे कंट्री। तो मैंने एक बार चर्चा में ऐसे ही बोला, मैंने कहा उनका खुद का कंजम्पशन कुछ नहीं है, तो उनको तो जो बनाना वो बेचना बाहर। हमारे यहाँ खुद का कंजम्पशन इतना बड़ा है कि हमारे तो पहले खुद के घर का पूरा करके उसके बाद भी जो सरप्लस होगा उसी को एक्सपोर्ट होगा, इसलिए उसका कोई वो नहीं है। पर हम उतना और ज्यादा बनाए, जैसा अभी अरविंद सर ने बोला कि काफी दिक्कत जो आ रही है ये तो अपनी है, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। कि अपने यहाँ की डिमांड है, उन डोमेस्टिक डिमांड, ग्लोबल ट्रेड में शेयर भी अपना बढ़ रहा है, और धीरे 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 पॉलिसी भी ऐसी कन्वर्ट हो रही है गवर्नमेंट की, ताकि मैन मेड फाइबर का जितना भी टेक्सटाइल है उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में हो सके। उस हिसाब से धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो क्या ये था कि एग्रीकल्चर कॉटन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, और किसानों को बचाने के लिए मैन मेड पे एक्स्ट्रा ये पॉलिसी थी तो मैन मेड पे एक्स्ट्रा टैक्स शुरू से ही, पहले कॉटन जब एक्साइज ड्यूटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी पॉलिसी, तो कॉटन पे कुछ भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सिंथेटिक कपड़ा है मैन मेड फाइबर का, तो उस पर कभी 5%, कभी 12%, कभी 8%, अलग अलग टाइम पे अलग है। तो धीरे एक में ऐसा है, जब 97-8 की बात है, 890 कि चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने ड्यूटी ही खत्म कर दी, एडिशनल ड्यूटी जो बनती थी वो खत्म कर दी, न सिंथेटिक पे न कॉटन पे काम से। तो उसके बाद धीरे 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 रफ्तार पकड़ने लगा सिंथेटिक का कपड़ा, क्योंकि जब तक हम मैन मेड फाइबर में नहीं जाएंगे और उसको जो विश्व का जो ट्रेंड है 70-30 उस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इसका नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी। दूसरा अपने यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेडेशन के लिए सरकार अलग अलग समय पर अलग अलग स्कीम ला रही है। एक तो स्केल ऑफ इकोनॉमी की भी दिक्कत है, क्योंकि चाइना या वियतनाम इनके जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है उसके कंपैरिजन में हमारी जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है बहुत कम है, बहुत उसके मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने यह समझा, पॉलिसी में लाए, पहले 10 साल पहले एक टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड बनाया। जो भी इंडस्ट्री रनिंग इंडस्ट्री है और वो अगर अपनी जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसमें अगर वो अपग्रेडेशन करना चाहता है, टेक्निकली ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो या जो भी हो, तो इसके लिए वो अगर लेता तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सब्सिडी। ये करीबन 4 साल चली, 5 साल चली, और इसके कारण काफी ग्रोथ। भीलवाड़ा में तो मैं देखा हूँ इसके कारण करीबन आप जा सकते हैं कि करीबन 40% ग्रोथ जो है ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड की जो सहायता मिली इंडस्ट्री को उसके कारण। क्योंकि सबके पहले 1980 में लूम्स कौन से थे? एक लूम हार्डली 40-45 मीटर कपड़ा बनाता था 24 घंटे में। धीरे धीरे फिर आए ऑटोमेटिक लूम आए, 100-150 मीटर बनाने लगा।
धीरे धीरे सर्जर आए शटललेस, वो ज्यादा प्रोडक्शन लगा। आजकल एयरजेट आ गए तो करीबन 1000 मीटर रोज, 1200 मीटर रोज, जैसी जो आरपीएम की स्पीड है उस हिसाब से कपड़ा बनने लगा। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड हो, क्योंकि सरकार अगर शायद ये फंड नहीं देती या बजट नहीं देती, पॉलिसी में ये नहीं करती, तो उसका फायदा जो अपग्रेडेशन का नहीं मिलता, ये ग्रोथ नहीं होती। तो सरकार की पॉलिसी के कारण ये ग्रोथ की। अभी वर्तमान में जो है स्केल ऑफ इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाए, पर्टिकुलरली फॉर द सिंथेटिक क्लॉथ, क्योंकि यहाँ रेशियो कम है। तो सिंथेटिक क्लॉथ के लिए जो भी मैन्युफैक्चरर है वो पीएलआई स्कीम, एक 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, एक 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की। अगर कोई इसमें लाता है तो पहले की सब्सिडी का एक माइनस पॉइंट था कि यूनिट चले या ना चले सब्सिडी चली जाती थी। तो उसको देखते हुए सरकार ने नियम बनाया, पॉलिसी में यह रखा कि भाई ये केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पर, अगर वो यूनिट इकाई चलेगी तो ही हम उसको सब्सिडी देंगे, अदरवाइज अगर वो नहीं चलती है तो हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। तो पीएलआई स्कीम आई। पीएलआई स्कीम में 100 करोड़ मैंने पूछा जब कमेटी में था, कंसल्टेटिव कमेटी में हूँ, टेक्सटाइल के में माननीय मंत्री जी चेयरमैन, उसको बोला, मैंने कहा कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट तो जो बड़े बड़े वाले उद्योगपति उनको फायदा दे रहे हो आप। तो कह रहे कि यहाँ के उद्योग को प्रभावित करने के लिए नहीं, हम तो ये इसलिए दे रहे हैं, बना रहे बड़े बड़े कि स्केल ऑफ इकोनॉमी जो आज चाइना में है, जो दूसरे कंट्रीज में है, वो अपने यहाँ पे भी हो, और इसी कारण उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये पॉलिसी। तो ये पीएलआई स्कीम की स्कीम है, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यूएशन टेक्सटाइल के अंदर होता है रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग सकता कि 100 करोड़ की जिसमें मशीनें लगी। तो हमने मंत्री जी को बोला अब उसमें नहीं, पीएलआई में एक स्कीम नहीं और पॉलिसी अंडर प्रिपरेशन है, तो भाई उसमें लेस अमाउंट की, जितना कम हो सके, मतलब जो रेडीमेड गारमेंट के हिसाब से, तो पीएलआई स्कीम रेडीमेड गारमेंट में लागू हो, उस हिसाब से चला। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी उसको भी इम्प्लीमेंट हुआ। और इसके साथ साथ जो आज अगर आप बजट देखें तो सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल भी नया ग्रो हो रहा है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल में टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन शुरू किया सरकार। अब उनका ये कि टेक्निकल टेक्सटाइल जितना ज्यादा होगा, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल का उदाहरण हुआ तो हम गए कभी, हमारी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गई थी लगता ले लगा, तो वहां पे जो ग्लेशियर में सैनिक रहते हैं उनको ऐसा कपड़ा चाहिए, उनकी जो ड्रेस होती है वो करीबन 2.5 लाख रुपए की होती है, क्योंकि वो कपड़े की ये क्वालिटी है कि जो कपड़ा पहन लेता तो उसका शरीर का टेम्परेचर होता ही रहता है, वो उस माइनस जो 40 डिग्री टेम्परेचर है वो भी असर नहीं करता वो कपड़ा पहनने के बाद शरीर का। ये टेक्निकल टेक्सटाइल है, तो ये अभी बाहर से इंपोर्ट करता है। तो इसमें मिशन में क्या यहाँ पे रिसर्च के लिए बड़ा, क्योंकि अब तक इंडिया के अंदर रिसर्च पर कोई ध्यान नहीं, रिसर्च पे बहुत कम, खर्चा भी कम होता था, कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि परंपरागत अपनी चल रही है और अपनी डिमांड है कपड़ा। तो देखा भिलवाड़ा में इंडस्ट्री में, भैया आपने जब तक बिक रहा है तब तक बनाया जाओ, नहीं बिके तो फिर सोचो कि क्या करेंगे। इनिशिएटिव जो नया लेना चाहिए वो भारत के अंदर जो है कम है, तो भाई और टेक्नोलॉजी करते जाए, जबकि आज की आवश्यकता है समयानुकूल परिवर्तन हर चीज, क्योंकि जब टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में तो जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो इतना जल्दी चेंज होता है कि मतलब पॉलिसी जो है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कंज्यूमर का टेस्ट इतना चेंज होता है, अगर उसको जज करने वाला नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो जो पॉलिसी है अपने इंडिया में, पॉलिसी सरकार की पॉलिसी डिसीजन से इंडस्ट्री का बिहेवियर तय होता है और उसी हिसाब से इंडस्ट्री रन होती है, आगे बढ़ती है। तो ये धीरे धीरे जो चल रहा है, तो ये एक अब जो बात चल रही है कि धीरे धीरे और कैसे होते हैं। तो आप सभी यहाँ पे जो है ये साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, आप ये फोरकास्ट कर सकते हैं अपने फील्ड्स, अपने रिसर्च में, हो सकता है आपका रिसर्च हो 2 महीने 4, कि भाई क्या इंडिया में जरूरत है। आप कोई की एरिया की ग्रोथ स्टडी देख करो, जैसे आप भिलवाड़ा को लोग में भिलवाड़ा हो, आप मैं पूरा स्वागत करने को तैयार हूँ, और वहाँ ग्रोथ आप देखें कि 42 साल मतलब 82 में जहाँ 5 लाख मीटर प्रोडक्शन था और गिनती की 5-6 यूनिट थी बनाने वाली, आज 500 के करीब तो यूनिट है और प्रोडक्शन 9 करोड़ से ज्यादा महीने का हो गया। तो ऐसा क्या उसमें है, ये एक रिसर्च का आप करो, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत आ रही है। तो आप बात करते हैं क्योंकि मैं इस फील्ड में
लगा और मेरे को 40 साल से कपड़े के काम नहीं, तो जो भी दिक्कत आती है जहाँ पे भी जहाँ होता है तो भाई ये परिवर्तन क्या हो सकता है, ये पॉलिसी में परिवर्तन क्या हो सकता है या इसमें। तो अभी जो पॉलिसी आ रही है उसका कैसे, तो एक तो PLI की आ रही है, दूसरा आ रहा है प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क PM मित्रा। इसके अंदर भी जैसा है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन में वो जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कोई भी काम हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। PM मित्रा पार्क पे है, 7 पार्क उन्होंने अनाउंस किया और उसमें काफी स्कीम का उसका पीछे एक ही है कि जो भी बड़े बड़े हैं जो लॉजिस्टिक खर्चा बचाने के लिए सारा एक ही एरिया में सारा फाइबर से लेके गारमेंट तक का काम हो जाए ताकि उनका खर्चा बचे, टाइम बचे और उस हिसाब से वो आगे ग्रोथ कर सके, कंपटीशन में ठहर सके। इसके साथ साथ अभी चल रही, जैसा सर ने बताया भाई FTA वगैरह का, अभी 2 FTA के एग्रीमेंट हुआ और उसका बेनिफिट मिलने लग गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया से FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी पहले ये स्थिति थी कि भाई बांग्लादेश वाला ऑस्ट्रेलिया माल बेचता था तो उसके 5% कुछ भी नहीं लगता था कस्टम, और इंडिया से जाता था तो 5%, चाइना से जाता तो भी कुछ नहीं, क्योंकि उनका FTA एग्रीमेंट था। अब वो इंडिया से हो गया, तो आज एकदम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए डिमांड धीरे धीरे एकदम बढ़ रही है। ये पॉलिसी है, उसके कारण हो सकता है पॉलिसी में कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है, भाई ये देखो ये बार्गेनिंग होती है वहाँ पे, FTA के जो भी एग्रीमेंट होते हैं सरकारों के बीच में ही बार्गेनिंग होती है। जैसे तो सऊदी के साथ हो गया FTA और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, और अभी UAE का मतलब इसके UK के साथ, इकोनॉमिक यूनियन के साथ और USA के साथ ये चल रही है बात, और लगता है जल्दी ये फेवरेबल डिसीजन इसमें आ जाएगा। और आज की तारीख में क्या होगा, जो इंडिया की टेक्सटाइल बढ़ने का सबसे बड़ा अभी कारण हो रहा है वो हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज जो टेक्सटाइल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, उसको अवॉइड करने लगे। ये जो एक मौका मिला इंडस्ट्री, कहीं आज कहीं पे भी जाए तो एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं बाहर वगैरह, हमारे बच्चे जाते हैं वो यही कहते हैं पापा अपने प्रेफर जो है अपना माल करते हैं आज की तारीख में, पर जरूरी है कि डिलीवरी हो जाए टाइम पे डिलीवरी, क्योंकि अपने यहाँ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है। और उस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को देखते हुए अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सरकार ने बनाया। अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जहाँ पहले मालगाड़ी का जो वो एवरेज रनिंग थी 25 किलोमीटर, वो 75 किलोमीटर हो गई, दिल्ली से लेके कांडला पोर्ट तक बराबर इतनी स्पीड से हो। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत होती, जैसे जैसे इंडस्ट्री की है उस हिसाब से पॉलिसी सरकार में अमेंड कर रही है। मेरा तो बस एक ही आग्रह है अब भी इस बारे में, क्योंकि आप इंडिया की जिसको क्रीम कह सकते हैं वहां यहाँ है, तो उस क्रीम से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जितना आप इसमें सहयोग कर सकते गाइड करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा ये नहीं, हमारे तो पॉलिटिक्स में एक अलग चीज होती है, अलग बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइड का अगर हमको मिल जाए उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये विश्वास आपको मैं दिला सकता हूँ उसको पॉलिसी इम्प्लीमेंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ के लिए जरूरी है वो है पॉजिटिव पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्री। अगर वो पॉजिटिव पॉलिसी इंडस्ट्री की नहीं होगी तो इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री वो ग्रोथ नहीं। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी ने काफी घोषणाएं की, और आज धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि जो पहले गोला बारूद बाहर से मंगाया जाता था वो आज करीब करीब बंद हो गया। आज भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अपने आप में प्रोडक्शन, अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो अपने आप धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रोथ ही करेगी। और जो मोदी जी का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वह जरूर पूरा हो, और इसके लिए सब लगे हुए हैं और आप सभी से इसके लिए सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। It's a pleasure to be here to talk about a subject that I've had a ringside seat to since I was born. And I can, having seen this field for the last 40 years, I can very confidently say that we are in a very exciting and a very pivotal point in the textile industry.
I think Subhash gave a very excellent talk. He touched upon many themes that I'd like to sort of re-emphasize in what I'm also about to say. I think I resonate with almost everything he said. Um, but I'd like to place it in the context of this pivotal time period, how the world is changing. Um, the textile industry has been characterized by one very, very major thing, which has been China's dominance over the last 3 decades. China controlled almost 40% of the global trade. And the next highest, which was us, was 4%. So that was the difference in size and scale. Over the last 2.5, 3 years, that 40% has shrunk to 23, 24%. And it's likely to shrink further. So this immense rebalancing of global dominance in textiles is afoot at this point in time, and that represents an opportunity for all of us in emerging markets. And what has happened is it's important to see this change in the context of where India plays in the supply chain. Though we are extremely large, we are very, very strong on fiber, we are very strong on yarn, we are somewhat strong on fabric, and for a country our size, we are extremely weak on garment. The second major theme that is happening in this world today is the sort of change in the way buyers or consumers of textiles are behaving. Not long ago, there used to be the way the large buyers, large retailers, large brands used to consume textiles is by a policy of having large departments that did buy. So they would nominate fiber, they would nominate yarn, they would nominate fabric, they would nominate garment converters, and they would themselves connect the dots. And they would tell the fiber supplier to send the yarn supplier, the fiber to the yarn supplier. They would pick the fabric mill, they would pick the garment converter. With competitiveness increasing, with the advent of fast fashion, which has dominated likes of Zara and Uniqlo that have 12 collections a year. Normally 2 collections a year was the norm. Now it's gone to 12. With the success of these brands, this policy of connecting the dots and the time it takes to do all of that is becoming redundant. And so, what buyers are saying today is, I'm going to dismantle my teams and I want the supply chain to pick up that slack. They should show me the best designs, they should execute those designs, they should stock my shelves, they should manage logistics for me, and they should manage replenishment. Now, to do this, you need to be very strong at the front end of the value chain, which traditionally India has not. And that is why, as this change has started to happen, as Subhash said, a lot of that quick business has gone to countries that had good garmenting infrastructure, Bangladesh, Vietnam. So that's the second trend, how consumers are consuming. The third mega trend that is now sort of afoot is how you and I consume. 5 years ago, it was inconceivable to buy something that needed touch and feel online. You'd like to touch fabric. You'd like to feel. Now we are all very comfortable shopping on Myntra and Flipkart. And my business sort of spans fiber to retail. And on the retail side, in a country that hasn't seen as much digital penetration as there is potential to see, we are seeing almost 30% of the business migrate to online, which has been accelerated by COVID. Pre-COVID, it used to be 15%. And even post-COVID, this 30% isn't going anywhere.
So fundamentally there is a change in how we consume. That means that breadth instead of depth becomes much more important. People want options. And because they are online options, people don't want to buy too much of any one option. That has huge implications on the kind of technology we use. So that's the third major trend that is there. And the fourth, and I think the one that I'm concerned most about, is climate change. Textiles, after steel and power, is the most water and carbon footprint intensive manufacturing sector. And the way we are going, the way we are continuing to produce on current trajectory, we are about to miss the target. So there are these science-based targets that are established, taking the baseline of 2015 carbon emissions and say that we have to reduce carbon from that 2015 baseline to there's a target of reduction by 2030, so that global temperatures do not exceed more than 1.5 degrees of warming. Each industry has that science-based target. We are set to miss it by 50%. If we don't change the way we manufacture. And so, of course, there's a lot happening in the industry around the world, and I'm hopeful, and I still firmly believe that there's a chance to act and change. But that has that fourth trend also has mega implications in terms of threats and opportunities, especially for a country like India. So now, bringing these changes that are afoot into the Indian context, what are our weaknesses and what are our opportunities? I'd just like to spend 5 minutes on that before I stop talking and there's some questions. I think on the thank you. So on the challenges side, I think Subhash spoke about a lot of these, but I'm going to repeat them again. So tariff barriers were spoken about, and I think a lot of our competition has a large advantage today. Bangladesh is duty free to Europe and UK, Canada, Pakistan is duty free. Vietnam has some preferential duty structures. So I think this is one area that we need to work on, and as Subhash rightly mentioned, this government is very serious about this point. So that's the good news. So we've, as he said, cracked 3 of them, and the 4th one is very advanced. And I think this will present a big shift in the way people look at India today. Cotton has been historically our strength. It will continue to remain our strength, but it is also, because it has been such a strong strength, it has also become a weakness, because we haven't looked beyond cotton. And the world is moving beyond cotton. If you look at the sustainability parameters, if you look at life of a garment, if you look at functionality, I think man-made fibers have made great strides in the last 10 years. And as Subhash rightly mentioned, if we don't embrace this change, we won't be taking advantage of the opportunity of these 4 major trends that are leading to this pivot in the industry. And there again, there is good news. There is PLI that has come, which is specifically focused on man-made, and there is also a lot of attention that the government is giving to technical textiles, which in India we haven't even begun to scratch the surface. And if you see, all nations that have developed, their consumption of technical textiles goes through an S-curve, and we are on the right side of the S-curve. So there's huge potential to embrace this man-made fiber trend, become a world leader in man-made fibers, and also develop our domestic technical textile market, which is a huge latent potential. So I put it in under challenges because we've still to demonstrate that we can do this, but it is something that I definitely believe that we can.
And then the third, which is and the most difficult thing, is this productivity gap. So if you look at apparel factories in India, 45% efficiency is the norm. You look at the same product category manufactured in Vietnam, 75% is the norm. And this is a 5% net profit industry. So 35% difference in productivity is a barrier that is massive barrier to scale. And I think this is there for a combination of reasons. And as the industry, we always have this sort of, tendency to push it on policy. Well, I think textile industry has been one of the biggest beneficiaries of successive policies which we've taken advantage of. So it's not just policy. Of course, policy needs to keep upgrading. And there is good effort to upgrade policy. But there are also many other things like cultural factors. The amount of attention that we pay to discipline, the amount of attention we pay to industrial engineering, the amount of attention we pay to investment in the next generation technology, the amount of interest we put into people development and training. I think policies exist for all these things together. But I think what we as an industry need to do is to shed that reticence and take those leaps. Some of those leaps will not land in a happy place. And we become a little spoiled in only investing in things that we have very high certainty of success. So I think as a mindset today, we need to change mindset, we need to address cultural issues, and we need to embrace technology in addition to gunning for better and better policy. And I think in the last 5 to 7 years, I think a lot of strides, especially with this government, have happened on the policy front, and there is a lot of receptivity towards looking at that. So this is a continuous process. We will keep improving policy, but we also have to do our bit as an industry to bridge this gap. And I see this as the biggest challenge in taking advantage of these changes that are happening. Coming to the opportunity side of the balance, man-made fiber. I've already spoken about that. Garments, because of these changing behavioral trends, unless we make it big in garments, and because of this productivity gap and cultural factors. For example, in the garment industry, you rarely find a factory with more than 2,000 people in one location. In China, you will have location 10,000 is the norm. Even in Bangladesh, 10,000 is the norm. We are very afraid to build factories bigger than 2,000 people because we are afraid of labor liabilities, unionization, regulation. So all these things need to be addressed, but we also need to take those leaps. We are afraid of dormitories. We are a multicultural country. Most garment workers are female. How do you manage 10,000 girls in one place in our cultural setting? These are the challenges that we have to overcome if we are going to reach that productivity gap. And we have to go forward and become big in garments. Sustainability, the fourth trend I spoke about, climate change. I think India is the best place to take advantage of this. I think some of the manufacturing powerhouses have not understood sustainability as well as it needs to. And I think in India, because we are from fiber to fashion, we have the opportunity to crack sustainability, and nobody's made this their plan, whereas we have the opportunity to do that and make not only a difference in terms of capturing market share, but also to meeting our SBTi goals of mitigating climate change. So there's a lot of interesting things happening here, and I think India has the opportunity to take the lead there. And finally, innovation. So जो सुभाष जी ने बोला था कि जब तक बिकता है तब तक हम बेचते हैं, that is the most true statement. I mean, being inside the textile industry, and that sort of stymies our ability to innovate. And
this to me is a complete paradox, because I think we have the smartest people on this planet in this country. You know, Southeast Asia culturally is a disciplined culture. We are culturally a creative culture. I think look at the, you know, historical, cultural, art, all this has flourished in India. Highest IQ. All the Fortune 500 CEOs, a lot of them are of Indian origin, come through our educational systems. So there is no reason why we should not, you know, right now the badge of technology sits with Taiwan. All the cutting edge progress in fiber development, in man-made fiber textiles, the software sits in Taiwan, just like the semiconductor chips, etc. that sits in Taiwan. Similarly, textile innovation sits there. And the young generation, I was just speaking to somebody today who told me that the young generation of Taiwan is not as adept as the old generation. So there's a changing of the guard. This is an opportunity for India to step in and take that badge away from them. And institutes, the technical institutes, management institutes, all have a role to play there in making India and India's textile industry, you know, a hub on technology and innovation. The government is also very serious about this. They launched this National Technical Textile Mission. A lot of focus on innovation, R&D, which hasn't been our strength, but there's no reason why it shouldn't be our strength. So I think very exciting period, and I think the next 5 years, how we as an industry mitigate these challenges and grab these opportunities will define how well we succeed in, you know, making textiles a good flag bearer of this $5 trillion dream. Jai Hind. FTAs as one of the. So that will be my first question. The second question has to relate to the innovation part that again both of you mentioned. That big data innovation. But starting with the first one, what is your assessment of where we are? आपके नजरिए में अभी कहाँ पहुँचे हैं in terms of getting the FTAs in place? और अगर हम अनुमान लगाएं कि in the next 1 or 2 years वो सारे FTAs आ जाएंगे, तो textile उद्योग को what will be the kind of difference जो आएगा? What will be the nature of the difference and the opportunity that will get created? Over to you. So I feel that Australia was a big one, and the next big one is UK, which is very, I mean, should happen, at least on current evidence. It should have, I mean, maybe it's delayed a little bit, but very close to being done. Even if that happens and nothing else happens, huge demand shift will happen. People will start looking at us very differently from the way they look. Because fundamentally, our competitiveness vis-a-vis Bangladesh is not that different. But there are two sides to this coin. Demand will get generated, but have we created enough capacity to fulfill that demand? I think that challenge is still unanswered. So we'll have to start working on that. Europe is a little more complicated because demands on both sides are we are a little further away. Is what I hear. I'm not an expert. My brother actually engages a lot more with these topics than I do. But I think UK could be next. EU could be next. UK will happen. EU will be after that. US is a little bit long drawn. That's my assessment. बातचीत चल रही है, लेकिन जैसा मैंने बोला ये FTA एग्रीमेंट नेगोशिएशन वो कुछ कंडीशन रखते हैं भाई आप इन चीजों पे ड्यूटी हमारे, तो ये नेगोशिएशन क्या था पूरे कोई इंडिविजुअल आइटम पे नहीं होकर एज ए होल
वो डिस्कशन है, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। और जैसा मैंने बताया है कि यूके तो करीब करीब फाइनल है, बाकी में अभी कोई ज़्यादा नहीं है। पर उसके अलावा भी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा बोला कम्पिटिटिवनेस, आफ्टर दिस कस्टम ड्यूटी दूसरे कंट्री फिर भी प्रेफर करते हैं इंडिया को आज की तरह। मेन दिक्कत है भारत की कि सप्लाई चेन बराबर नहीं। सप्लाई चेन के बहुत रीजंस हैं और केवल इसी वजह से थोड़ी दिक्कत है। बाकी इवन थोड़ा कॉस्टली पड़े तो भी जो बाहर के बायर्स हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो क्वालिटी इंडिया बता रहा वो मिलने वाली है। उसमें कोई ये जो रेपुटेशन इंडियन प्रोडक्ट की है और उसके कारण ये ज़्यादा बाधा नहीं बनेगी। पर और केवल गारमेंट में, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको स्केल जो है 100 करोड़ का मत, इसको नीचे करो। और उसके हिसाब से जैसे ये नीचे होंगे काफ़ी इंडस्ट्रीज PLI स्कीम के तहत गारमेंट के अंदर बात सबसे बड़ा है। मैं गया था अभी साउथ में, त्रिपुर में हमारी कमेटी गई थी, तो वहाँ एक यूनिट की विजिट की थी। लगभग उसमें 6-7 हज़ार आदमी का क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, वो थी होजी मीटिंग की थी, लेकिन काम करते हैं। तो धीरे धीरे कल्चर जो है यूनियन का धीरे धीरे कम हो रहा, पॉलिसी भी लेबर की बैलेंस करती। अभी तक तो जो पॉलिसी लेबर की थी वो एक तरफा लेबर के पक्ष की थी। अब इंडस्ट्री और लेबर को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे एकदम तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपना लोकतंत्र है उसमें कोई भी चीज चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। पर धीरे धीरे प्रयास होगा। नया जो वेज कोड है लागू होने के बाद काफी उससे जो लेबर्स प्रॉब्लम है, लेबर को भी फायदा होगा और इंडस्ट्रीज को भी सरकार मिलेगा। ये नहीं वेज कोड लगा रहा है, वो तो जाहिर बात है कि अगर इंडस्ट्री में उन्नति होगा तो लेबर को भी फायदा होना चाहिए। उद्योगपति अगर वो अच्छे हों तो नहीं तो दत्ता सामंत जी फिर वापस आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन द रिसर्च पार्ट। आप लोगों ने बोला कि alluded to the fact कि इसमें we can do more, we should do more. So we also have the director of the Ahmedabad Textiles Industry Research Association sitting here with us. So my question to both of you would be, as industry folks, how can institutions like ATIA or any others for that matter, from a research standpoint, what can they contribute? What is the position of industry? Industry का क्या अभी दृष्टिकोण है कि हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, बाहर से हम क्या मदद ले सकते हैं, and which are the areas जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है? एक चीज़ तो आपने मैन-मेड बताया, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करें, टेस्टिंग में है, डिज़ाइन में है, इक्विपमेंट में है, सर्टिफिकेशन में है, some of those things on the R&D part, if we can hear your views. So I think the research is of two kinds. One is pure and the other is applied. And I think that dichotomy has played out in the way institutions and industry behave. Industry is so far on the applied scale, and institutes, including educational institutes and TRAs, have been so indexed on the pure side of things that the work that happens here and the work that happens here don't benefit from each other. So I think there needs to be convergence a lot more. I think industry needs to get involved. I mean, sort of, we've been too focused on only selling and not enough focused on bettering our competitive position through innovation, which needs to happen. And I think institutes need to sort of dovetail much better with industry and hear its voice
a lot more. And right now, everybody is happy in their own silos, which we need to break. And I think there are attempts to break that. I'm optimistic that it will happen, but that needs to happen. जैसा आपने बताया, इंडस्ट्री तो जो एक्सेप्टेड है, जो है उसी को स्वीकार करके रिसर्च को स्वीकार। मैं तो शुरू से ही बोला, जब तक मेरा बिक रहा है मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है, और धीरे धीरे रिसर्च पार्ट में आ रहा है। मैं अभी देखा था रेडीमेड गारमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे डिजाइन से तो प्रोग्रामिंग में वो डिजाइन जो चाहिए कि कौन सा धागा कितने पिक का, कौन सा कलर, उसका व्यू क्या, उसके हिसाब से कंप्यूटर में डाल के उसका प्रिंट निकाल, देन सैंपल बना। ये इंडस्ट्री के लिए यही रिसर्च, क्योंकि जो मार्केट मांग कर रहा है उसको कैसे करना। तो ये धीरे धीरे जो इंडस्ट्री वाले हैं, गारमेंट वाले, ये शुरू करने लगे। तो उसका जो प्रिंट निकाल के फिर उस प्रिंट के हिसाब से पहले प्रिंट बायर से अप्रूव करवाते, देन वो अगर अप्रूव कर देता प्रिंट को, उस हिसाब से कपड़ा बना के देन सैंपल देन। पर ये टाइम लगता है, तो रिसर्च पार्ट जो है ना वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने लगा। जब आगे जरूरत पड़ेगी उनको, क्योंकि जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है, इसमें बिना रिसर्च का आप कुछ कर भी नहीं सकते। उसको आपको जो आपका रॉ मटेरियल है, हाउ टू यूज, इसके लिए हाउ टू बेटर यूज, इसके लिए उसको पूरा रिसर्च है। और अभी बहुत कम, अभी तो केवल जो ये इंस्टीट्यूट है, जैसा आपने बोला, तो जो इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करते हैं, जनरली इंडस्ट्री उसको एडोप्ट करती नहीं करती, कोई नोट्स हो। जबकि रिसर्च जो है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा तो इंडस्ट्री उसको अडोप्ट करेगी। पर अभी ये स्थिति है, इसमें थोड़ा गैप है। और अभी जो ये इंस्टीट्यूट्स का भी जो है, एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, भाई इस इंस्टीट्यूट से उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई आप जो माल भेज हो उन्होंने ओके कर दिया, देना। तो जो इंस्टीट्यूट से जो लिंक है ना, वो इतना है कि भाई वो सर्टिफिकेट मिल जाए, उससे ज्यादा उनका लिंक नहीं है। ये फैक्ट है। ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इनफैक्ट आपसे थोड़ी देर पहले जो जिक्र कर रहा था कि हमारा सेटअप हो साइंस में जो है working with two companies who actually help them develop some stuff which has a research and to write an application. दोनों पहलू जो है उसमें मौजूद है। So let me now turn it over to our audience for questions. If you have, I have actually a lot more, but I would like you guys also. Go ahead. नमस्ते सुभाष जी। हेलो सर। मेरी प्रश्न ये है कि जितना इम्पैक्ट होता है कॉटन की वजह से ऑन द एनवायरनमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू पॉलिएस्टर एज वेल। तो इन सिचुएशंस लाइक दीज, अगर लोगों को शिफ्ट करना है फ्रॉम कॉटन टू पॉलिएस्टर, तो अगर शिफ्ट करने के लिए, पर क्योंकि जीएसटी एक इशू है, पर उससे ज़्यादा फार्मर्स को एमएसपी मिलता है, तो इसीलिए एडवांटेज इनीवेज हो जाता है। तो इज देयर एनी रीजन फॉर एमएसपी फॉर कॉटन होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए एमएसपी फॉर कॉटन? अगर निकाला गया है तो फार्मर्स शुरू करेंगे शो करना better food items which can be edible for us, then people might start preferring more of polyester. आपकी क्या कहना है इस पे? एमएसपी क्यों चाहिए कॉटन पे? सरकार की क्या एक इंडस्ट्री में सबकी जिम्मेदारी है, और जो किसान जो पैदा कर रहा है वो भी जिंदा रहे, यह सरकार की जिम्मेदारी। और इसीलिए ये एमएसपी जो है, और इसमें धीरे धीरे जैसे इसके साथ साथ दूसरा प्रयास भी कर रहे हैं कोई इनका, जैसे क्या प्रयास है कि अब तक तो किसान जमीन पे हर कुछ भी कर देता था। आपका मोदी जी की सोच के बाद सारी जो एग्रीकल्चर जमीन है उनका टेस्ट हुआ, सोइल टेस्ट, सबके सोइल टेस्ट कार्ड बने, और उसमें उनको ये बताया गया कि केवल एमएसपी नहीं, उनकी इनकम भी दूसरे काम भी चल रहे हैं। एक बार वो दूसरों से जो हो जाएगा, धीरे धीरे एमएसपी अपने आप ही खत्म होकर डिमांड सप्लाई आ जाएगा। लेकिन जब तक वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचते,
जब तक उस स्टेज पे, आज आप देख ले गाँव में हालत ये है कि किसानी का काम करने वाले रूरल बेल्ट में जो है ये स्थिति का काम करने वाले ही नहीं है। आज पंजाब में किसानी का काम करने वाले यूपी से जा रहा है, उड़ीसा से जा रहा है या बिहार से जा रहा है, वहाँ का लोकल यही हमारे राजस्थान में कि वो जो है काम नहीं कर, और जो भी सरकार की जिम्मेदारी सबके प्रति है, केवल एक इंडस्ट्री या सबके प्रति है। अपने तो 60% के करीब आबादी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उनके प्रति थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि जमीन की स्थिति खराब होती जा रही है, इसलिए उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि भाई किसान के आमदनी डबल बढ़े, तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी जमीन की किस्म भी सुधरे, उसको उनको जो बीज मिल रहा है वो भी ढंग का मिले ताकि प्रोडक्शन उनका ठीक हो। और एक बार ये अगर अभी आप बता रहे हो एमएसपी, इस बार कॉटन में एमएसपी में 1 किलो पर चेंज हुआ। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एमएसपी पे परचेज करता है वो कह रहे हैं कि भाव को इंडस्ट्री के लिए मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ परचेज ही नहीं कर सके, क्योंकि ऑलरेडी रेट्स इतने हाई थे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉटन के रेट हाई हो सकते हैं पर किसी कारण से नहीं हुए। तो इसलिए बाकी अभी मैं बताऊँ पिछले साल का ये बता रहा हूँ आपका 1 किलो की एमएसपी में न तो कॉटन परचेज हुआ और न गेहूं परचेज हुआ, क्योंकि जो एमएसपी की रेट है उससे ऑलरेडी ज्यादा रेट मार्केट में थी। तो ये वो अलग विषय है, लेकिन हाँ किसान की आय बढ़े और जैसे बढ़ेगा तो फिर अपने आप, जैसे इस बार हुआ, अपने आप जो एमएसपी करेंगे एमएसपी से ज्यादा वैसे ही मार्केट में रेट मिल नहीं सकता है। इसलिए वो एमएसपी का कॉटन का जो बेसिक जो मैं बता रहा हूँ आपका यहाँ यूज, क्योंकि अपने यहाँ है ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना, प्लस टेक्निकल टेक्सटाइल में जो मेजर रॉ मटेरियल है वो मैन मेड है, कॉटन नहीं है। इसीलिए फाइबर जो है धीरे धीरे सरकार इस पर, पहले तो केवल किसानों को बचाने के लिए रोका जाता था मैन मेड। तो भाई अगर ये आर्टिफिशियल फाइबर आ गया बाहर से, पॉलिस्टर इसको ये बाहर से आने लगा है, काम आने लग गया, तो कॉटन को कौन लेगा, जबकि अपने लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर करेंगे। तो इस कारण से अपन आपको धीरे धीरे स्थिति है, केवल मैन मेड को जो प्रोत्साहन मिल रहा है केवल इसलिए मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में हमारा कुछ शेयर बढ़े, तो किसी हिसाब से उसमें किया जाए। MSP will have a very small role to play in the dynamics of how farmer decides what to grow. I think things like how many cotton spinning mills are coming in the country and what the global demand of cotton is, that will have a much bigger role to play. So I think the change will happen because as a manufacturing industry we are demanding more man-made fiber. That will lead to changes in cropping. Climate change will lead to, I'm very worried in the last 3 seasons of cotton, there have been erratic things happening. The yield estimate at the beginning of the season and the yield estimate at the end of the season, we have not been able to match because of late rain, too much heat wave. These trends have that were easy to predict are no longer that easy to predict. So I think climate change may have a bigger role to play than MSP in whether a farmer chooses to plant cotton or something else. Just Yeah. Good evening, sir. I am Bhanu Chaudhary. I am a 5th year PhD student here. मेरा सवाल ये है सर कि जैसे कई सारे सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, जैसे फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन है, बेटर कॉटन इनिशिएटिव्स है, ये सारे जो सर्टिफिकेशन हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जैसे क्योंकि हमको अपना जीडीपी और उसका कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल का इसके अंदर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से बैरियर की तरह मतलब आता है सामने जब हम एडवांस कंट्रीज में जब हम अपना एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए तो क्या इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री के, क्योंकि आप दोनों साइड पे हो, पॉलिसी मेकर की साइड पे भी हो और एज इंडस्ट्रियलिस्ट भी मतलब चीज़ों को देख रहे हो,
तो आपका व्यू क्या है कि हम इस पर्टिकुलर डायमेंशन को और कैसे improve कर सकते हैं? अपन जो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जैसे धीरे धीरे भी चलन आ गया यूएस में, ये जो कॉटन का कपड़ा जाता ऑर्गेनिक कॉटन, तो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। और ये तो उसको आप मना नहीं, ये वो क्योंकि डब्ल्यूटीओ में ये नहीं है, कोई डब्ल्यूटीओ में किसी को रेस्ट्रिक्शन करना होता है तो वो सीधा रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता, वो ऐसी कंडीशन जो डब्ल्यूटीओ में नहीं है उसको लगा देता है, और वो पर अपने को वो फुलफिल तो करनी है। इसमें अभी तक तो कोई वो रास्ता नहीं है। तो भाई जो उन्होंने दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक कॉटन उन्होंने मांगा तो ऑर्गेनिक कॉटन का देना। अब ये नहीं कि साहब ऑर्गेनिक तो कैसे होगा, कहाँ होगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है। अब उसका हो सकता है उनकी इंटेंशन गलत हो इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये संभव है, क्योंकि वो नहीं चाहते हो कि हमारे यहाँ से यहाँ का माल डंप हो या आवे, तो उसको कैसे, हम भी ऐसे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें चर्चा होती है जब कस्टम्स में है, तो वो ऐसा रास्ता सजेस्ट करते हैं, ये माल ज़्यादा आ रहा है इसको रुकना चाहिए। आप ये कंडीशन है, अपने जैसे कंडीशन है, कोई भी माल चाइना का जो है, अभी बांग्लादेश को, तो जब तक जिस कंट्री में उसका 35% 40% वैल्यू एडिशन नहीं हो तब तक उस कंट्री का नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वाया मीडिया ऐसा आने लग गया तो धीरे धीरे उस हिसाब से, तो ये तो रिक्वायरमेंट है, इसको तो भी कोई रास्ता अभी तक तो नहीं है। But why are you seeing this as an impediment? I think we are the leader in this. India produces the highest PCI, highest organic cotton. Yes, there have been frauds that have been caught, and that will happen. But we produce the highest organic cotton, highest PCI. We've even started producing regenerative organic cotton, and our perceived credibility on all these standards is way higher than any other country. So it's a competitive advantage, not a disadvantage at all. Because after this Zhejiang issue, where effectively all of China's cotton has been banned because of forced labor issues, we are the only point of call for all these things. So every buyer under the sun is rushing to India to buy all this BCI, organic, regenerative organic, all those standards. So I think this is it's not a problem. Window of opportunity. Yeah, we are working with 1 lakh farmers to do all this, and there are brands that are co-financing these projects. And for me, that's extremely important because I know that if they co-finance this project, my orders are confirmed. So it's a source of great advantage. It's very interesting. We have a question from online. We have another 50 or 60 viewers on Zoom and YouTube. The government targets to achieve 100 billion textile exports by 2030, almost 2.5 times of current level. Do you think man-made fibers will drive this growth? And how will India rise to this challenge, or will it be cotton? It will be a combination. I think man-made fibers will have to take up a big share of that, plus apparel, so forward integration, plus technical textiles. So I think these are the 3 areas that will sort of pick up the slack. There was one question from this side. Hani, please. Hello sir, this is Dr. Dhaval Patel from Bhilwara Advanced Materials Private Limited, and we are engaged in technical textile manufacturing. Sir, my question is to Punit sir. So as we are discussing about 5 trillion economy and contribution of textile in that achievement, I just want to know that your thoughts on which 3-4 segment of technical textile will lead the growth out of all 12 technical textile segments. I mean, segmenting the technical textile industry is a very difficult job because each product is so specialized. We put them into different markets. But broadly, I think every technical textile segment should do well in India just because of the domestic consumption. If you look at medical textiles, if you look at geotextiles, I mean, we're going to develop infrastructure like crazy. After COVID, nobody is going to skimp out on having adequate medical protective gear.
if you look at protection, if you look at defense, human protection, that can only go up. If you look at packaging, we are already pretty strong. We have to go from low end to high end. So I don't think that there will be any specific segment that's going to outpace the other. But I think technical textiles as a whole is going to really go through the roof. And the challenge there is all technical textiles is high gestation period, as you very well know. It takes some time before you get off the ground. And we don't have that patience as an industry. So it took me 8 years to turn profitable. But now, technical textiles is more than 20% of our business portfolio, which has the highest return profiles and the fastest growth. But I had to, battle both internal and externally for those first 8 years. So I think that's the nature of this business, because it is dependent on qualification, it is dependent on certification, it is dependent on winning, trust of buyers who don't necessarily see India as a trusted source for many of these things. So we have to overcome those mental barriers as well. But once you are able to do that, the good thing about this industry is that if your product is qualified, it will take 8 years for the competition to catch up. So then you reap the benefits. But I feel all segments will be. Any further comments? So I know there are many more comments, but both our guests are on a very tight schedule, so we will have to call it a day at 7:40. Please send your questions online or to the forum that is there, and I will try to catch hold of them otherwise also and get their input. That will give me an opportunity to again furthermore gentlemen. Right. But thank you very much for taking the time to come here. It was a pleasure. Let's give both our guests today a big hand.